morning, everybody. Okay, देखा जाए समझते हैं क्लियर देखा उसको ओके स्टार्ट करिबा ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी लेट्स एंड स्टडी पॉइंट आपन स्वागत आज हम स्टार्ट करिबा हमर न्यू टॉपिक सिंक्रोनस मोटर कहले हम कोन बुझु से सेटे जानियो सिंक्रोनस मोटर हैला an alternating current motor synchronous motor को हम उठो कोन कहू alternating current motor is run at a synchronous speed okay an alternating of a current motor which run at a synchronous of a speed in all condition point be noted in all condition is called as a synchronous motor ता माने गोटे alternating current motor बा AC motor हमें जो कहू छे synchronous motor is a one type of AC motor run at a synchronous of speed okay जो synchronous speed रे run करिवो से पुनी सबु कंडीशन ऑल कंडीशन ता पे कोनोसी कंडीशन फोरबिडेड नहीं सेते आप कोन कह जाय synchronous motor बोले हमें कहू so other word रे मध्ये हमें कोन कह परिबा alternating current motor in which the speed of a stator magnetic field and speed of the rotor are equal is called as a synchronous ता माने हमें कोन कहू छे रोटर स्पीड आउ स्टार्टर स्पीड जते बेले इक्वल हे जीवो सेटा को हमें सिंक्रोनस मोटर मध्ये कहू छे बुझी पाइलो व्हाट इज रोटर स्पीड सपोज हमें जानि छे एनी मशीन ते तीटा पार्ट रोज वन इज ए रोटेटिंग पार्ट another is a static part बा अदर वर्ड हमें कहू छे रोटर पार्ट आउट ए स्टार्टर पार्ट जते रोटर पार्ट रो स्पीड आ स्टार्टर पार्ट रो स्पीड इक्वल हे जीवो दैट मोमेंट हम त कोन कहबा सिंक्रोनस ऑफ अ मोटर मन रखिला so synchronous motor re sleep is very important what is sleep means ns minus nr by ns so ns minus nr by ns so ns माने कोन ns रे means हला स्टार्टर स्पीड ns means हला कोन स्टार्टर स्पीड ओके so nr माने कोन nr माने हला रोटर speed so point be noted nr is our rotor speed and ns is our starter speed so बुझेला so जते बेले हमर रोटर स्पीड is equal to हमर स्टार्टर स्पीड हे जीवो that moment हम ता कोन कहबा सिंक्रोनस मोटर कहबा केबे हेले ns equal to nr हबो नहीं एटा कहबा हमर भूल हे जीवो so सदा बेले रोटर स्पीड इक्वल टू कहर हो स्टार्टर स्पीड से सेटा को हम कोन कहबा सिंक्रोनस मोटर कहबा सो स्लिप हमें कहले नॉर्मली स्लिप कहले कोन बुझछ ns nr ns इक्वल टू केते आसीबो 0 आसीबो त माने एटी स्लिप केते आसीबो 0 आसीबो पॉइंट बी नोटेड नेक्स्ट पॉइंट देखबा व्हाट इज डिफाइनिंग ऑफ अ टर्मिनोलॉजी सो हम जते सिंक्रोनस मोटर पढुचे सेते सम ऑफ डेफिनेशन जानिया जरूरी कोन डेफिनेशन सो व्हाट इज सिंक्रोनस स्पीड पर जानिबा the speed of a rotating of a magnetic field is referred to as a synchronous speed जते बेले हमें कोनोसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को हमें कोन करछे रोटेटिंग ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट नोटेड कोन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को रिफर करछे एज ए सिंक्रोनस ऑफ स्पीड सो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मींस रोटर रे प्रोड्यूस होतवा मैग्नेट ताको हमें कोन पर रिफर करिया का को सिंक्रोनस स्पीड को रिफर करबा और इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए ns पॉइंट नोटेड आपको कोन हम रिप्रेजेंटेड करछे ns को रिप्रेजेंटेड करछे ताले सिंक्रोनस स्पीड को हमें कोन रिप्रेजेंटेड करछे ns बोले हमें रिप्रेजेंटेड करछे सो ns बा सिंक्रोनस स्पीड रो बाहर करिया पे फार्मूला कोन रोचे
120 F by P. So P is represented of kaha ko na pole ko, and F is represented of kaha ko frequency ko. Okay, so this point, this formula is very important for every competitive exam. So ये formula टा बहुत important. So point में noted that NS is equal to कौन 120 F by P. बुझेला समझते? So next point is our कौन F is means supply of frequency. मुझे जोड़ा कहली F को हमें frequency को represented करेगा and P को हमें number of pole को represented करेगा. Okay. Next point देखबा. So next point is our hunting. So hunting means कौन? Hunting is a one type of a terminology. जोड़े कि oscillation बा oscillation one type of a oscillation. सो बेले बेले आमर मेसीन रो हंटिंग साउंड आसी थाए हंटिंग रा मीनिंग हला ऑसिलेशन अकरिंग इन ए रोटर ऑफ ए सिंक्रोनस स्पीड सिंक्रोनस मोटर रे रोटर रे प्रोड्यूस होतवा साउंड को हम कोन कहछे ऑसिलेट बा ऑसिलेशन प्रोड्यूस होता ऑसिलेशन को हम हंटिंग बोली कहछे बुझेला समझते सिंक्रोनस मोटर रे जो रोटर रे प्रोड्यूस हुए सो हंटिंग कोटे प्रोड्यूस हुए रोटर रे प्रोड्यूस हुए तो रोटर कौन प्रोड्यूस हुए वन टाइप ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस हुए ओके जोटा कि को मूवमेंट रे प्रोड्यूस हुए एट द मूवमेंट ऑफ रनिंग कंडीशन रे जो जते बेले हमरो सिंक्रोनस मोटर रनिंग करथाय ता मूवमेंट रे से मूवमेंट रे रोटर रे दैट इज द टू पार्ट्स रोटर एंड स्टेटर सो रोटर पार्ट रे वन ऑसिलेशन विल बी अकर गोटे ऑसिलेशन रे क्रिएट हुए जो ऑसिलेशन को हम कोन कहछे हंटिंग बोली कहछे बुझेला समझते नेक्स्ट पॉइंट देखबा में कॉज ऑफ हंटिंग सो ये जो हंटिंग टा क्रिएट हुए बा ऑसिलेशन टा काहे की क्रिएट हुए बिकॉज दैट सडन चेंज इन लोड जते बेले हमें लोड टा सडन चेंज हे जिवो दैट मोमेंट रे हंटिंग साउंड बा हंटिंग ऑसिलेशन विल बी क्रिएटेड आउ कोन मोमेंट रे आसे ना सडन चेंज ऑफ फील्ड करंट जते बेले हमें फील्ड करंट को सडनली चेंज मध्य करूचे से मोमेंट रे मध्य हंटिंग साउंड भी बा हंटिंग ऑसिलेशन विल बी क्रिएटेड ओके So due to in a cycle of a variation in a load of a torque, जेतबेले हमर टॉर्क क्रिएट हुए दैट मोमेंट ऑफ a cycle variation है cycle means of that is एटा हमर जेतु एसी सो पॉजिटिव साइकिल टू नेगेटिव साइकिल क्रिएट हुए तो जो साइकिल वेरिएशन हुए सेम मोमेंट रे मध्य ऑसिलेशन विल बी क्रिएटेड सो पॉइंट में नोटेड दैट हंटिंग साउंड केतबेले से जेतबेले सिंक्रोनस मोटर रे रनिंग करूथबो दैट मोमेंट रे रोटर रे गोटिए ऑसिलेशन प्रोड्यूस होतबो से ऑसिलेशन को हम कोन कहबा हंटिंग बोली कहबा बुझेला समझते जति हंटिंग हमर सिंक्रोनस मोटर रे क्रिएट हुए ताहले हमके इफेक्ट कोन इफेक्ट आसीबो प्रोबेबिलिटी फेलियर ऑफ अ सिंक्रोनाइजेशन हमें जो सिंक्रोनाइजेशन जो करू सिंक्रोनस मशीन रे सिंक्रोनाइजेशन ता कोन फेलियर हे जिवो आ कोन आसीबो द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रेजोनेंस विल बी इंक्रीज जोटे कि हमें रेजोनेंस मध्य इंक्रीज होवार चांस रहता है और नेक्स्ट देखिए मेथड ऑफ रिड्यूस ऑफ हंटिंग जदि हंटिंग हमें आसुचे ताले हमें केमिते ताको रिड्यूस करेबा बा ऑसिलेशन टा केमिते हमें रिड्यूस कमेबा ओके बाय द इंस्टॉलिंग ऑफ अ डैम्पिंग वाइंडिंग गोटे हमें डैम्पिंग वाइंडिंग हमें इंस्टॉलेशन करेबा और कोठे एट ए मैग्नेटिक ऑफ पोल स्विच जिकोन से हमर जो मशीन रो मैग्नेटिक पोल अछि सो मैग्नेटिक पोल स्विच समस्त जानि थिबो पोल कोर सहित पोल स्विच विल बी अटैचमेंट सो पोल स्विच रे हमें गोटे एक्स्ट्रा को वाइंडिंग करूचे दैट कॉल्ड ऑफ डैम्पिंग वाइंडिंग त कोन कहछे हमें डैम्पिंग वाइंडिंग बोले हमें कहछे से यदि डैम्पिंग वाइंड इंस्टॉलेशन करेबा ताहले हमें कोन हंटिंग को हमें अटके परिबा बा हंटिंग रे जो हमें ऑसिलेशन जो सिंक्रोनस मोटर जो हमर ऑसिलेशन क्रिएट होतो ताको हमें कमेई मध परिबा by using in a fly wheel माने कोन हम जते बेले सिंक्रोनस ऑफ यूज करछे सिंक्रोनस मोटर दैट मोमेंट रे गोटे फ्लाई व्हील हम यूज करछे जते हम फ्लाई व्हील यूज करबा कोथरे ना शाफ्ट रे पछोट देखिते गोटे फैन टाइप रे बुलथुवा जेटा हम फ्लाई व्हील बोली हम कहूचे से फ्लाई व्हील को जते हम यूज करबा ताले हम कोन हबो से जो ऑसिलेशन टा क्रिएट होतो ऑसिलेशन टा कमी जीवो देन अदरवाइज बाय इन ए प्रॉपर डिजाइनिंग और सिंक्रोनस मशीन सो जदि गोटे सिंक्रोनस मशीन को प्रॉपर्ली हम डिजाइन करबा तेबे मध हमर कोन हो परिबो रिड्यूसिंग हे परिबो हंटिंग सो बुझियाला नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्टिंग टॉर्क सो द टॉर्क व्हिच स्टार्ट द मोटर इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग टॉर्क सो स्टार्टिंग टॉर्क कहले कोन बुझे जो टॉर्क
starts करे of the कोटे motor रे is called as of a starting torque. Then running torque कौन the torque which work at a running condition जते बेले machine हम running करे that moment रे जो torque create हुए सेटा को हमें कौन कहूचे running torque बोली हमें कहूचे. Okay, next point देखिए pull out torque. What mean by pull out torque? So चारि प्रकार torque हमें जानिबा गुटे होचे हमर starting torque, another is our running torque, next is our pull out torque, and next upcoming is our pull in torque. So pull out torque the maximum torque, the maximum of a torque which is the motor can be developed without of a pulling out of a synchronous sim. जते बेले हमें synchronism करूचे synchronous समय रे हमर maximum torque कौन होचे maximum torque will be created. मैडम कहले तू आसीबू मैडम हॉस्टल भीतर जे अच्छा हां पास से फोन से लास्ट क्लास क्लास ना तीन क्लास आपको सब सिंक्रोनस ना ना तांकर ईएमआई फिक्सेशन आसी ना त पिला आसिले कहू होला 8 टा क्लास हो पहला त आसी ना 8 टा आसिले थ्योरी होला आउ ए जो सुदान शर्मा मैच के क्लास होछंदी कौन हो गया हां कौन सुखम सुमित मानसो नोरा बळे इसोरन जो अछि ना ना लास्ट बैच रे जो हम जाइते पीछे जो 30 पिला जाइते ग्रुप रछि मैडम ग्रुप रो मैसेज करू बुझेला. सो पुल आउट टॉर्क माने कोन द मैक्सिमम टॉर्क व्हिच मोटर कैन बी डेवलप मैक्सिमम टॉर्क व्हिच मोटर कैन बी डेवलप विदाउट पुलिंग आउट टू सिंक्रोनिज्म कौन सी पुलिंग आउट रो सिंक्रोनिज्म दरकार नहीं जते बेले मैक्सिमम टॉर्क विल बी कोन डेवलप हो ओके त माने एटी कोन दोचे द मैक्सिमम टॉर्क व्हिच द मोटर कैन बी डेवलप विदाउट पुलिंग आउट ऑफ अ सिंक्रोनिज्म. सो ताको बिना सिंक्रोनिज्म रे जतले मैक्सिमम टॉर्क पुल आउट होई जिवो से मोमेंट रे हम कोन कहबा पुल आउट ऑफ अ टॉर्क बोली कहबा. सो पुल इन टॉर्क कोन द अमाउंट ऑफ अ टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर ए सिंक्रोनस ऑफ अ मोटर टू पुल इनटू ए सिंक्रोनिज्म. सो द अमाउंट ऑफ अ टॉर्क जो अमाउंट ऑफ अ टॉर्क विल बी रिक्वायर्ड पड़िबो अब the amount of a torque is required to a synchronism of a motor. To pull into a synchronism is called as a pull in of a torque. कौन कौन से pull in torque कौन से. Next is a torque equation of a synchronous motor. यदि हमें कौन से torque equation पढ़ोचे, so torque equation रो हम some of a conditions will be needed. कौन यदि हमें torque synchronous motor रो torque equation है T is equal to 3 terminal of a voltage in frequency EMF frequency जोड़े कि हमारा frequency बोले हम कहूँ. So omega s into xx equal to sin del. Okay. So here is Vt is our terminal voltage, EF is our excitation of voltage. So EF means always point be noted excitation of voltage and del is our torque of angle. And 3 by omega s is our constant. So 3 by omega सदाबले constant है. So torque equation कौन है सो आउटर देखियो 3 by omega x into Vt EF divided by xs into sin del. Okay. So synchronous reactance कौन है xs equal to xl plus xar. Okay. Then zs is equal to rs plus x square root over. So xl is equal to कहते लीकेज रिएक्टेंस. ओके xl को हम कौन कहते लीकेज रिएक्टेंस कहते एंड ra को कौन कहते आर्मेचर रेजिस्टेंस बोली कहते एंड xar को कौन कहते आर्मेचर रिएक्शन अक्रॉस द रिएक्टेंस बोली कहते. सो zs को कौन कहते सिंक्रोनस ऑफ इंपेडेंस कहते.
So xs is equal to 0.99 per unit. Okay, then xx is greater than xar is greater than xl is greater than upon ra. So point we noted that xx that means upon ଆମର କ'ଣ କହୁଛେ ଏକ୍ସଏସ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସିଙ୍କୋନସ୍ ରିଆକ୍ଟାନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ଏକ୍ସଏସ୍ କୁ କ'ଣ କହୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ synchronous reactance. Synchronous reactance is greater than upon armature reaction across the reactance. जो हमारा armature reaction जो will be created कहाँ मध्य across armature reaction जो across जो created होची reactance सदाबेले कम हेतु काठर हेतु ना synchronous of reactance सेही भले लीकेज रिएक्टेंस मध्य आर्मेचर रिएक्टेंस थरु बा आर्मेचर रिएक्टेंस अक्रॉस जो रिएक्टेंस क्रिएट हुए रिएक्शन रे so armature reaction जो reactance should be created is greater than of काठर leakage reactance. So then leakage reactance is greater than of काठर of na armature of resistance. So point be noted, this point is very important. So each objective question will be created. Okay, next point देखियो. So diagram of related mechanical power and torque. So गोटे mechanical power और torque में देखो कौन relationship देखिबा. So development the power PM, development of power is equal to कौन EB into P divided by of XS into sin alpha. So हमें XS रो माने कौन जानी छे XX है synchronous of reactance. Synchronous of reactance. So XX है हमें कौन synchronous of reactance बोली कहूँ. Okay. Next EB is equal to our back EMF बोली कहूँ. And XC equal to reactance voltage बोली कहूँ. So sorry into V. So V is terminal voltage. So EB is back EMF. And XS is your synchronous reactance. Okay, then sin alpha is your angle. So that moment of जेतेबेले हमर P maximum था 0 रो and P maximum. So relationship between कहाँ मते power and PM and alpha भितर. So गोटे होचे हमर PM alpha भितर आउट होचे हमर torque equation. एटा होचे हमर torque equation, एटा होचे हमर power equation. The relation between of power और torque भितर कम. So torque maximum रे एटा हला हमर torque और maximum torque ये मध्य हमर power maximum. So ये भी मध्य हमर PM and alpha रे ये मध्य torque and alpha रे. Okay, जेतले zero condition है ये भी जहाँ हबो movement जेतले maximum को movement करिवो that movement रे torque also be इनको maximum level को movement करिवो. So ये जहाँ भी हबो directly proportional हबो. So जो पावर हमें डेवलप करोचे कोथरे ना हमें मैकेनिकल पावर जो डेवलप करोचे सो मैकेनिकल पावर PM is directly proportional to the EB and B and PM is inversely proportional to the XS. Okay, बुझेला. So this point is very important. So alpha is angle. So alpha रा meaning एट बुझुची कोन angle को बुझुची. If alpha is equal to 0, then PM is equal to 0. If alpha is equal to 90 degree, then PM is maximum. So point we noted that alpha is 0, then PM also 0. If alpha is 90 degree, then PM also be 90 degree maximum. So specialities of a synchronous motor. What is the speciality? It is a double excited of a motor. So आपको कौन कहते हैं डबल एक्साइटेड मोटर बोली कहा जाए. So for its operation both AC and DC power supply will be required. जेतले synchronous motor को हम ऑपरेशन करूचे बा रन करूचे both AC and DC power supply should be required. It always run at a synchronous of speed which is proportional to the frequency of the supply. So NS is directly proportional to the supply frequency NF. Okay. Next point देखते हैं NS is directly proportional to the
F. The speed of a synchronous motor is independent of load. Synchronous motor speed टा सदाबेले independent of load. Speed of a synchronous motor independent load. A synchronous motor can be made operate under a wide range of a power factors. So a synchronous motor can be made operate under the wide range of a power factor, both in a lagging and of a leading. So synchronous of a motor are not of a inherently self-starting. Okay, in a synchronous motor are not inherently of a self-starting. Some of our auxiliary means have to be provided for a starting. So advantage of a synchronous motor कौन? The advantage of a synchronous motor means it operates at a constant speed from no load to full load. From no load to full load. Operate करिबा at a constant of a speed. Power factor of a synchronous motor can be easily controlled by the changing of the excitation. So आमे जेतबेले पावर फैक्टर टा कंट्रोल कर परिबा synchronous motor केमिति by changing in excitation of the motor. For a low speed application, synchronous motor are be more economical than a induction motor. जदि आमे लो स्पीड ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାହେଲେ synchronous motor is better than of a induction motor. Okay, disadvantage କ'ଣ? Synchronous motor require in DC excitation. So ଗୋଟେ synchronous motor को run କରିବା ପାଇଁ excitation କରିବା ପାଇଁ हम DC source ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର. Okay, at the rotor condition. So synchronous motor are not in a self-starting. Point we noted, synchronous motor are not a self-starting, and it is a costlier than of a induction motor. Used for very costlier than of a induction motor. The construction of a synchronous motor is more complicated than of a induction motor. जो हमें synchronous motor जो construction पढ़ुचे is very more complicated than of a induction motor. Okay, so application of a synchronous motor कौन देखिबा? An over excited of a synchronous motor can be used to improve the overall of a power factor of the plant while carrying their of a rated load. So हमें plant रो power factor improvement करिया ପାଇଁ हमें synchronous motor को uses करूछु. So it is used in a clock and timing device. Clock and timing device व्यवहार कराउछु. Industrial of automation रे व्यवहार कराउछु. इंडस्ट्रियल ऑफ ऑटोमेशन व्यवहार कराउछि, कंप्रेसर रे व्यवहार कराउछि, पंप रे व्यवहार कराउछि, पावर जनरेशन रे व्यवहार कराउछि, तसेत रोबोटिक बॉल मिल्स एंड रेकॉर्ड प्लेयर को इनोवेटर यूज कराउछि. सॉरी लाइन बोलना. ओके, नेक्स्ट क्लास हमें देखिबा. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. तो पिला आसीगले तो तुम एते लेट कौन पे करूछ?